Welcome all to the Yoga Research Study Circle under the umbrella of WHRF Women Health Research Foundation. Yoga Research Study is formed to encourage research work in the field of yoga and health. All are welcome to enroll for research work and avail the opportunity to get their work published and recognized. WHRF also conducts training courses and workshops at our studio in Sector 52 in Noida and various other centers in NCR region, details of which are available in the WHRF Facebook page and the WHRF site. Now today, our topic, which is more concerned today, is the scientific effects of meditation, which has been presented by our Rachna ji. She holds a master degree in economics and graduate degree in yoga science. She is actively involved in the field of yoga as a therapist to spread the knowledge of yoga. She has a spiritual bent of mind and has carried to be more agile physically and mentally. Our topic for today is scientific effects of meditation on subconscious mind. Now, I please hand over to Rachna ji. Hello everyone, and namaskar to all the viewers and the team of WHRF. First of all, I would like to thank Yogaguru Mohan ji for giving me this opportunity to share my thoughts on meditation and its effects on subconscious mind. Meditation is a topic which is very much talked about these days. What is it all about? ध्यान के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं और आज के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में ध्यान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सिर्फ ध्यान ही एक ऐसी चीज है जिससे करके हम अपने स्ट्रेसेस को, अपनी एंजाइटीज को, अपनी परेशानियों को, मेंटल स्टेट को हेल्दी रख सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं एट मेंटल लेवल. So what is it all about and how does it work at the subconscious level? This is a question which keeps coming in our mind. There are many questions which I will be answering during my session, but in case there is anything more that viewers want to know, please feel free to ask after the session. I'll be staying over for the question answer session. Meditation, dhyan or ekagrata, which means focusing your awareness at a certain point with the help of your breath, mantra, or maybe a candle or a flower that is also used to meditate. जो लोग beginners होते हैं, उनका prime question होता है कि how to start meditating. They are confused as to what to do first to go into the meditative state, and especially those who have not been practicing yoga from before. But meditation can be done by people who are otherwise not so much involved in the yogic practices also, in the sense that if you are at a point of time getting very anxious, you can just sit down and quieten your mind. But to get into the deeper stages of meditation, to get at the subconscious level, you definitely need to start with the Ashtanga Yoga, the Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. So Dhyan is the second last stage in Ashtanga Yoga. By doing meditation, we are controlling our mind. Our mind is a good slave and a bad master. So we should never let it wander recklessly. That is what we need to take care of. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक कार है, कार को एक डायरेक्शन देने के लिए, उसके इंजन को कंट्रोल करने के लिए you need a driver. In the same way, to control our mind, to give direction to our mind, and then mind gives direction to our body, our thoughts, we need the intellect. To control that intellect or the mind, the breath is the only way with which you can do it. Thoughts are like stimuli that keep coming, occurring all the time.
which can be controlled by Man, Buddhi, Chit, and Ahankar. To control the whirls of thought recurring in mind, we need to control our breath. When we go into a meditative state, we regulate the flow of our breath through the practice of pranayama. Pranayama is channelizing the vital energy force, the breath that we take, which is the lifeline, which is the sign of us being alive, the breath. To control that and to channelize and use it for the betterment of our health and the whole of physical and physiological system, we need to give it a direction, and that is done through breath control. Our mind is impulsive, rational, but our intellect is packed with logical, discretional judgment. It is very recent that scientists have discovered the relation between the functioning of the brain corresponding to our nasal cycle, as published in the Open Journal of Biophysics 2019. Let us understand how meditation works. By regular practice of controlled breathing, one can completely alter the neuronal patterns of the brain. It modifies the deep-rooted emotional responses of one's personality, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं. हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और बहुत से संस्कार हम जैसे ही जन्म लेते हैं तब से हमारे चित्त में वो उनका रहने शुरू हो जाते हैं. Those संस्कार settle down there in our mind and which develop our personality. आपको जान के आप शायद जानते भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहूंगी कि एक मदर के वूम में जब एक बच्चा बर्थ लेने के लिए तैयार हो रहा होता है, उस समय माँ की जैसी मेंटल स्टेट होती है, जैसी सबकॉन्शियस लेवल पे वो अपनी थिंकिंग को रखती हैं, जैसा सोच विचार आहार विहार विचार सब रखती हैं, वैसा ही असर उस बच्चे के मेंटल लेवल पर भी पड़ता है. And if the mother is taking care of her mental health, the child to be born will also be mentally agile, healthy, and normal in every sense. While meditating, we control the flow of breathing, getting in control of the pranic shakti, the vital energy force that helps our body to function 24/7. When we are in meditative state, body and mind relaxes, and there is an inner calm and peace that is created, and we are able to connect to our inner consciousness, that is the subconscious level. From the conscious level, we get into the subconscious level. जो थॉट्स हमारे चलते रहते हैं, जो संस्कार की जिससे मैंने अभी बात करी, जो संस्कार हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के, पुराने संस्कार, और हर दिन हम नए संस्कार हमारी जिंदगी से जुड़ते जाते हैं, उन संस्कारों को हटाने में अगर हमारे कुछ नेगेटिव संस्कार बन गए हैं, which are harming us, harming our thoughts, harming the peace of our mind, we can remove them only through meditation. जब हम meditative state में subconscious level पे पहुंचते हैं, तो हम वहां पे affirmations देते हैं, self affirmation, that I am a happy, healthy body, I am a pure and positive soul, I am connected to the super cosmic power. ऐसा जब हम affirmation देते हैं, तो हमारे बॉडी में जो पूरा सिस्टम अंदर काम कर रहा है, the automatic system, the computerized system made by nature, वहां पर memory cells भी होते हैं. It directly affects those memory cells, and that helps to change our thoughts at subconscious level. हमारी पूरी बॉडी सेल्स और टिश्यूज के साथ बनी हुई है, जैसा हम लोग सब जानते हैं. एंड अ हेल्दी बॉडी, व्हाट इज अ हेल्दी बॉडी? हेल्दी बॉडी वही है जिसके सेल्यूलर हेल्थ अच्छी है. जितने ज्यादा आपके बॉडी में सेल्स हेल्दी होंगे, उतना ही ज्यादा
आपका एक ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप हेल्दी फील करेंगे. When we reach into this subconscious state of mind, हमारा माइंड बहुत स्लो बीट करना शुरू कर देता है. In a normal process, our mind beats 20 to 25 times per second. But when we enter this subconscious meditative state, our mind slows down and beats at 10 to 15 times per second. Whereas when we are anxious or we face a challenging situation, this starts, the beat increases to up to 50 to 55 times per second. And that leads to release of acidic hormones. And those acidic hormones, when mixed with the blood, they reach the brain and create more anxiety, stress, and can be a cause of insomnia, it can be a cause of migraine, and it can create pressure on your heart and lungs. So to avoid that acidic hormones or acids to get mixed in the blood, we need to cool down our mind on a daily basis. The modern day life is very stressful because there is a lot of competition and everyone wants to be ahead of the other person. In this race, in this rat race, the stress, the burden comes on us, on our mind and body both. So when we are in the meditative state, what happens? जो हमारे happy hormones होते हैं, उनका release होता है. As soon as the body and mind comes to a relaxing state, the alpha state, all the happy hormones start releasing. They are like oxytocin, serotonin, melatonin, dopamine, and so on and so forth. And there is another hormone, which is cortisol, which is also called as termed as reverse hormone, because it increases our anxiety levels. As soon as we face a difficult situation, immediately the cortisol levels start rising. And when we are in the alpha state, this cortisol levels is controlled and it comes down. So what is it that a yoga practitioner of meditation should understand here? Meditation is a practice that helps to reduce your anxiety levels, stress levels. It helps to build up your confidence. It helps to increase your immune system becomes better. Your blood levels, all the pH levels get balanced, and it creates a very calm, peaceful, a healthy atmosphere in your body and helps all the systems inside to work in coordination with each other. So when we are meditating, interestingly, many of the biochemical factors that can be affected by meditation have also been the targets of medical drug companies to develop treatment for a number of mental and physical systems. For many of the ailments where we are not able to take a proper exercises, or we are not able to get the proper medical help, if we just sit down and meditate with the positive affirmations, working on our subconscious mind, we will be able to cure ourselves of all those ailments very soon. Be your own doctor. This is what we learn when we meditate, and we keep telling ourselves during meditation that we are healthy and happy. And that is what we become. जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं. तो मेडिटेशन करते टाइम जो बिगिनर्स हैं उनको एक सिंपल तरीका मैं बताना चाहूंगी. They should
just keep their eyes closed, sit in a comfortable position, and keep their awareness on their upper lip, just below their nostrils, and watch the each breath, that is exhalation and inhalation, and feel the touch of that breath on your upper lip. And at the same time, keep giving affirmation that the breath that you are inhaling is clean, pure, and positive. The breath which you are exhalating is full of toxins. It is black and warm. If you keep giving this affirmation to yourself and keep observing your breath, your mind will slowly calm down. और आपकी सांसें गहरी और लंबी होती जाएंगी. जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी और लंबी होंगी, आप स्वतः ही सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाएंगे, अल्फा स्टेट में पहुंच जाएंगे, जहां की आप बिल्कुल कूल और काम होंगे. तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या फैमिली लाइफ में कभी भी कहीं भी किसी चैलेंजिंग पोजीशन को सिचुएशन को फेस करते हैं, आप तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए. सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, एंड दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेटिव स्टेट. जैसे कि हम ज्यादातर लोग ऐसा सोचते और समझते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ साधु सन्यासी ही कर सकते हैं, या हमें ऐसा बनना होगा मेडिटेशन ध्यान करने के लिए, किन्हीं कंदराओं में जाकर बैठना होगा. तो ऐसा नहीं है. आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए हर रोज सुबह और शाम अगर आप 15 मिनट से 30 मिनट निकालते हैं मेडिटेशन के लिए, तो आप दूसरे दिन के लिए फिर से रिजुविनेट हो जाते हैं. आपके जितने भी नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी अंदर है आपके, वो सारी बाहर निकल जाती है. दिस इज हाउ यू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स. और जब हम इसे स्पेशल प्राणायाम्स के साथ, यानी सांसों पर ध्यान देते हुए जो टेक्निक्स हैं उनके साथ करते हैं, तो हमारे जितने भी लिम्फेटिक नोड्स हैं, या जहां भी कहीं मेटाबॉलिक लेवल, मस्कुलर लेवल, मेंटल लेवल पे जहां भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं और हम बड़ी इजीली एक ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं. इसके बाद जो बिगिनर्स हैं, अगर जब इस तरह से ध्यान में उनका ध्यान लगने लगे प्रैक्टिस में, तो वो अपने थर्ड आई सेंटर, जहां हम बिंदी लगाते हैं दोनों आईब्राउज के बीच में, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहां पर ध्यान रखते हुए, ऑब्जर्वेशन रखते हुए आप ध्यान स्थिति में बैठ सकते हैं. कुछ देर के लिए आप अपने मोबाइल्स बिल्कुल बंद कर दें, फैमिली से थोड़ा सा अलग हट के बैठें, बच्चों से अलग, जिससे कि क्योंकि जिस समय आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, उस समय किसी भी आवाज या किसी भी व्यक्ति के बोलने से आपको अचानक चौंकना नहीं चाहिए. आप इमिडिएटली अगर ध्यान की स्थिति में चौंक जाते हैं तो सडनली एक अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और आपकी पूरी हार्ट बीट और मेंटल जो ब्रेन में बीट चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो दैट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ problem at times, not always. So you have to be very careful while meditating. Sit in a quiet and peaceful, clean place and meditate every day करें. हर रोज इसके लिए समय निकालें. अगर हम हर रोज मेडिटेट करेंगे तो आई एम श्योर वी विल ऑल बी एबल टू क्रिएट अ ड्रग फ्री लाइफ and be active, and all sorts of stress and anxiety levels will be controlled by us, and which will give us a very healthy, happy life. We will be able to perform much better in whatever we do, whatever work we do, and it will help on each and every aspect of our personality, physical, physiological, mental, intellectual or spiritual. और हम सबको इस तरह से थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसी के साथ मैं इंद्रजीत जी से बोलूंगी कि उनके पास अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो जरूर पूछें.
Very fruitful session, Rachna ji. So I just saw one of the question, which is they want to ask कि हमें अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जैसे आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, जैसे इंसोम्निया है तो हमें अपना ध्यान किस तरीके से करना चाहिए, मतलब रात को सोने से पहले कोई टाइम शेड्यूल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी, मैं बताना चाहूंगी कि अगर नींद ना आने की या नींद बीच रात में कई बार नींद टूट भी जाती है, स्पेशली विमेन को जब थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है या मेनोपॉजल टाइम होता है, स्पेशली तब ये बहुत ज्यादा फेस करती है विमेन। तो आप सिर्फ जब लेटते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर आप लेट के कर रहे हैं तो सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए, भीतर आती और बाहर जाती हुई हर सांस को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए और बहुत जल्दी आपको बड़ी अच्छी मीठी नींद आ जाएगी। और एक और चीज है कि आप बैठ के आप 5 बार 10 बार भ्रामरी का प्रैक्टिस करें, जो कि एक प्राणायाम है, हम लोग पुराने सेशंस में बता चुके हैं। तो वो आप भ्रामरी करके और उसके बाद तुरंत मेडिटेटिव स्टेट में जाते हुए अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान रख के थोड़ी देर ब्रेथ पर ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल पीसफुल सोएंगे, अनडिस्टर्ब नींद आएगी आपको। Yeah, there's one more question. Like before getting into dharana, any stage of meditation जो हम practice करते हैं, तो हमें प्राणायाम करना जरूरी होता है, थोड़ा टाइम के लिए प्रैक्टिस करना? हाँ, ये इसलिए क्योंकि धारणा ध्यान इससे पहले एक प्रत्याहार की स्टेज होती है, जो मैंने अष्टांग योग के अंगों में बताई थी। प्रत्याहार यही होता है कि हम बाहर का जितना जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो स्टिमुलाइज हैं, उनसे अपने ध्यान को कट ऑफ करके अपने आप से जोड़ें। तो पहले हम लोग जैसे ध्यान शुरू करने बैठते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आंख बंद करके कुछ देर हम कायास्थैर्यम का अभ्यास करते हैं कि बिल्कुल बॉडी को स्टिल करके बैठिए, बंद आंखों से अपने बैठे हुए शरीर को इमेजिन करिए जैसे कि आप एक मिरर रिफ्लेक्शन देखते हैं। और फिर उसके बाद धीरे से उस ध्यान को आप भीतर ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अपर लिप पे आप आती हुई जाती सांसों पर ध्यान टिका सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको, या थर्ड आई सेंटर पर या हार्ट सेंटर पर या नेवल सेंटर का मूवमेंट भी, अगर आप बिल्कुल शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं और नेवल सेंटर के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप सांस भीतर लेंगे तो आपका नेवल थोड़ा एक्सपैंड होगा और छोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से आप एक प्रत्याहार की स्टेज में पहुंच जाएंगे और फिर वहां से आपको मेडिटेशन में जाने में बहुत सहायता होगी। Right. I think so. There is no more question is there now. We should nicely end the session now. Now, thank you so much, ma'am, for your wise words, and they're always very informative to us, as always, and it is really helpful to the viewers. And the way you have connected every threads from how the subconscious mind, how it is affecting our hormones and everything, it is so nicely explained, ma'am. So thank you so much for coming. Thank you, Indrajit ji. Thank you very much.